Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the seventh lecture of this series of CPC. Now the topic we need to discuss is the jurisdiction of civil courts from the perspective of territorial, pecuniary and the subject matter jurisdiction. Territorial, pecuniary and subject matter jurisdiction. इसमें सबसे पहले I would start with the territorial jurisdiction and then we will see subject matter and pecuniary jurisdiction. सब्जेक्ट मैटर के लिए कोई सब सेक्शन तो है नहीं. पेक्यूनियरी के लिए यू हैव टू रीड सेक्शन 3, 6 एंड 15. अब किस कोर्ट का कितना पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है वो तो सीपीसी में भी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है. इसके लिए अलग अलग स्टेट के अपने लॉज हैं. अब किस कोर्ट का कितना ज्यूरिडिक्शन है वो आपको पता करना पड़ेगा. अब दिस इज द लिस्ट विच आई हैड फॉर द पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन वेरियस स्टेट्स. लुक एट दिस. और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. For Delhi, civil judge is up to 3 lakhs, senior civil judge 3 lakhs and additional district judges 3 lakhs and up to 2 crores. Look at this. अब अगर आप हरियाणा पंजाब में देखो, एक सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन अनलिमिटेड होता है. एक सिविल जज अनलिमिटेड वैल्यू के सूट को सुन सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट के शुरू के दिनों में 2 साल तक, इंक्लूडिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड एंड 1 मोर ईयर, वो 2 लाख या 3 लाख तक का मैटर उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. लेकिन उसके बियॉन्ड ही कैन हियर द मैटर ऑफ एनी वैल्यू एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन दैट केस विल बी अ कोर्ट ऑफ अपलेट ज्यूरिडिक्शन. यूसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन फैमिली कोर्ट वगैरह में होगा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन फैमिली मैटर्स वगैरह में होगा, बट अदरवाइज दे विल बी कोर्ट्स ऑफ अपलेट ज्यूरिडिक्शन. एंड सेम थिंग विल अप्लाई इन यूपी ऑल्सो. जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है वो अप टू 5 lakhs, लेकिन जब सीनियर जज सीनियर डिवीजन हो जाएगा देन योर ज्यूरिडिक्शन इज अनलिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिकम्स द कोर्ट्स ऑफ अपलेट ज्यूरिडिक्शन. So all that I have to discuss, but first of all I discuss the territorial jurisdiction. अब territorial jurisdiction के लिए you have to read section 16 till 20, out of which first section I would discussing is section 20. तो पहले section 20 को discuss करेंगे हम. अब section 16, 17 and 18 have to be read together. यहाँ पर ये immovable property से related suit के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आपको किसी immovable property से related suit करना है, if you have to file a suit with respect to immovable property, then where will the suit lie? So there they are clearly saying that wherever the property is situated, जहाँ पर immovable property है वहाँ पर आप सूट कर सकते हो. लेकिन इसमें 16 में जो लास्ट क्लाउज है that relates to movable property. लास्ट क्लाउज relates even to movable property. उसको हम डिस्कस करेंगे later on. Now section 19 is talking basically about torts. It is any tort to person or to a movable property. किसी movable property से related किसी ने अगर tort किया है या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ने tort किया है, then the jurisdiction falls under section 19. अब इसके अलावा मतलब tortious matters related to person, tortious matters related to movable property and any matter related to immovable property. इनके अलावा whatever is there that will all fall under section 20. That will all fall under section 20. So section 20 becomes the main provision. 20 becomes the main provision because 19 और 16 का specific contest है. 16 is only with respect to immovable property and the last clause talks about restraint and attachment of the related to movable property. And 19 is talking about only tort to a human being and also to some movable property. और उसके अलावा जितने भी matters बच गए they will all fall under section 20. So you can say that section 20 is the main provision and it gives you the main principles of jurisdiction.
16 and 19 are the specific provisions related to some specific issues, and therefore we will discuss firstly the section 20. So now take out section 20. Subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendants, where there are more than one at the time of the commencement of the suit, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. तो ये तीन चीजें कह रहा है, जहाँ पे वो रहता है एक्चुअली एंड वॉलंटरली डिफेंडेंट, जहाँ पे वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, या फिर जहाँ पे वो काम करता है पर्सनली वर्क फॉर गेन। इन तीनों में से किसी एक जगह पर आप सूट कर सकते हो। अब ये नहीं कह रही है कि जहाँ प्लेंटिफ रहता है, काम करता है या बिजनेस कर रहा है, तो जहाँ प्लेंटिफ रहता है वहाँ नहीं कर सकते आप। दे आर सेइंग जहाँ डिफेंडेंट रहता है, बिजनेस करता है या फिर काम करता है, दैट इज द प्लेंटिफ हैज टू फॉलो द डिफेंडेंट। So the plaintiff has to follow the defendant. Plaintiff has to locate the defendant, where he works, where he does business, or where he is residing. He can file suit there. So that is one example. Then further they are saying any of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given, or the defendants who do not reside or carry on business or personally works for gain as aforesaid acquiesce in such institution. अब इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले नेक्स्ट क्लास देख लो। द काउज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेज। अब पहले सिंगल डिफेंडेंट की बात करते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द मल्टीपल डिफेंडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल डिफेंडेंट। Now suppose A has to file a suit against B. B is the single defendant. अब कहाँ कहाँ ये सूट कर सकता है? जहाँ पर ये एक्चुअली प्लस वॉलेंटरली रिसाइड करता है, या फिर वेयर दिस पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस, और वेयर एवर ही पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, वेयर एवर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ओके, अब नाउ एक और पॉइंट है थर्ड क्लास में, where the cause of action has either wholly or partly arisen, तो वो भी लिखोगे आप, wherever the cause of action has arisen। मतलब आपके पास एज पर सेक्शन 20 4 ऑप्शंस हैं सूट करने के लिए। यू आर द प्लेंटिफ्स, यू हैव गॉट द 4 ऑप्शन टू फाइल द सूट। फर्स्ट ऑप्शन इज wherever this defendant actually and voluntarily resides. Similarly, wherever he actually carries on his business. First of all, actually and voluntarily resides, और actually voluntarily अब समझेंगे हम। And second is wherever he actually carries on his business, and wherever he personally working for gain, or wherever the cause of action has arisen। तो अगर plaintiff को defendant पे सूट करना है, so he has got 4 options, and out of which one is explicit, one option is very explicit। जहाँ cause of action arise हुआ है वहाँ defendant रहता हो या नहीं रहता हो, आप वहाँ पर सूट कर सकते हो। cause of action erosion मतलब जहाँ पर violation हुआ है, so that place, और otherwise जहाँ पर defendant रहता है, काम करता है या फिर बिजनेस करता है, उनमें से किसी एक जगह पर आप सूट कर सकते हो। सो देयर आर 4 ऑप्शंस। अब सपोज अ डिफेंडेंट रिसाइड्स इन दिल्ली, ए डिफेंडेंट रिसाइड्स इन दिल्ली एंड सपोज ही कैरीज हिज बिजनेस इन जयपुर। अब वो बिजनेस करता है, वर्क नहीं करता, सपोज ही इज डूइंग बिजनेस। अब वर्किंग फॉर पर्सनल गेन मीन्स व्हाट, टू डू सम जॉब, एंड इन बिजनेस ही इज नॉट डूइंग जॉब। और कॉज ऑफ एक्शन मान लो अराइज हुआ है उदयपुर में, means the violation actually took place at Udaipur. Now tell me, at which of these places can the suit be filed by A? So the suit can be filed either of the places, Delhi, Jaipur or Udaipur. So that is what this section provides to you, and this is what is called
the principle of equity acts in personam, मीनिंग देयर बाय कि अगर आपको किसी से इक्विटी चाहिए, इक्विटी मीन्स व्हाट, रिलीफ, रेमेडी, अगर आपको किसी से इक्विटी चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो आप उसको फॉलो करो एंड यू सी वेयर ही कैन बी फाउंड, आइदर एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस और एट द प्लेस ऑफ वर्क और एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। कॉज ऑफ एक्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मैगजिम, बट डिफेंडेंट जहाँ भी पाया जाएगा, you act against this person. Sorry, that is what is called the equity acts in personam. And declaration in section 20 is the manifestation of this maxim. इसको लिख लो आप. Write down. The rule of jurisdiction is that equity acts in personam. The rule of jurisdiction is that equity acts in personam, that is one who seeks equity from another in the form of a relief from some wrong committed, for some wrong committed by the other, then he must follow that person. That is, he must locate the place of residence, work or business of the person, and the suit can be filed at either of these places. Apart from above, it can also be filed at the place where the cause of action either partially or totally arose. Apart from the above, it can also be filed at the place where cause of action either partially or totally arose. मतलब अगर हम इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम की बात करें तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। मानो मुझे तुमसे इक्विटी चाहिए, इक्विटी मतलब क्या, रिलीफ, रेमेडी, आई वांट जस्टिस अगेंस्ट यू, मुझे न्याय चाहिए, सो वॉट एवर इट वुड बी गिवन, डैमेजेस एक्सेट्रा। अब आई वांट द रिलीफ फ्रॉम यू, so I must follow you. My suit will not be filed at my convenience where I reside or where I do business, etc. My suit will be filed at your convenience, wherever you reside, you do business, or you work personally for gain. और दोनों के लिए इक्वल, any place where the cause of action has arisen, क्योंकि वो तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में है। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम डिफेंडेंट को थोड़ा बेनिफिट देगा कि भाई वो जहाँ काम करता है एक्सेट्रा वहाँ पर सूट करो, उसमें भी आउट ऑफ दोज प्लेसेस द प्लेंटिफ हैड द चॉइस। अब 4 प्लेसेस हैं, चारों में से जो प्लेंटिफ को अपने लिए सूटेबल लगे उसको चूज कर सकता है, लेकिन उन 4 के बियॉन्ड प्लेंटिफ नहीं जा सकता। प्लेंटिफ कैन नॉट से कि दैट सूट मैं वहीं करूँगा जहाँ मैं रहता हूँ, so that is not permissible here. लेकिन डिवोर्स एक्सेट्रा प्रोसीडिंग्स में, डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स वगैरह में वाइफ को ये राइट है कि आफ्टर द सेपरेशन वेयर एवर सी स्टेइंग, वहाँ पर वो सूट कर सकती है, लेकिन नॉर्मल केसेस में डिफेंडेंट जहाँ रहता है वहाँ पर केस हो सकता है। अब फिर से एक बार क्लाउज 1 and 2 पढ़ लेते हैं, बिकॉज इन क्लाउज 1 and 2 दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मल्टीपल डिफेंडेंट्स, दैट पार्ट ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस। सी फर्स्ट क्लाउज सेज the defendant or each of the defendants. Now let's talk about multiple defendants. Each of the defendants, where there are more than one at the time of the commencement of the suit, means what? On the date of the filing of the plaint on the filing counter. Commencement of the suit तो वही माना जाएगा, बेशक नंबर वगैरह बाद में मिलेगा, लेकिन the suit is being filed on the day you file it on the filing counter. At the time of the commencement of the suit, actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. अब ये कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो each of the defendants at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business etc. और सेकंड क्लाउज में अगर देखो, अगर they are saying any of the defendants where there are more than one at the time of the commencement, they are saying any of the defendants, और पहले वाले में कह रहे हैं each of the defendants. Second clause में they are using the words any of the defendants. In the first clause they are using each of the defendants. Any of the defendants where there are more than one
at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendants who do not reside or carry on business or personally works for gain as aforesaid acquiesce in such institution. My question to you is, there are two clauses, and in the first clause they are using the word each of them, and in the second they are using the word any of them. What is the implication? अब देखो एक बात ध्यान रखना कि जब हम क्लाउज और 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो हम एक ऑप्शन इस वाले ऑप्शन को अलग करके चल रहे हैं। कॉज ऑफ एक्शन की जगह पर क्यों, तो आप सूट कर ही सकते हो, इस वजह से हम इसको अलग करके चल रहे हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो कहाँ कहाँ सूट करा सकते हैं, रेजिडेंस, वर्क और बिजनेस, उन जगहों पर, या फिर क्लाउज सी में कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन तो रहेगा ही रहेगा, उसको अभी फिलहाल भूल जाइए। अभी हम बात कर रहे हैं रेजिडेंस, प्लेस ऑफ वर्क एंड बिजनेस। अब मान लो ए को सूट करना है बी और सी के खिलाफ, दो डिफेंडेंट्स हैं। कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ था प्लेस नंबर 1 पर। अब बी एंड सी बोथ रिसाइड्स एट प्लेस नंबर 2। बोथ बी एंड सी do their business at place number 3. Now suppose both B and C they work, both of them, at place number 4. अब बताइए कहाँ कहाँ सूट कर सकती हूँ, इनमें से कहीं भी। अब ये बताइए कि ये क्लाउज 1 का मैटर है या क्लाउज 2 का मैटर है। इट इज मैटर ऑफ क्लाउज 1 बिकॉज दे आर सेइंग ईच ऑफ द डिफेंडेंट्स। So clause 1 basically referring to the situation where by matter of fact defendant B और defendant C दोनों एक ही कोर्ट के जुरिडिक्शन के एरिया में रहते हैं, या एक ही कोर्ट के जुरिडिक्शन एरिया में वर्क करते हैं, या एक ही कोर्ट के जुरिडिक्शन एरिया में बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुखर्जी नगर में रहते हैं दोनों और बिजनेस करते हैं आज़ादपुर में, या फिर दोनों साथ में साकेत में काम करने के लिए जाते हैं, दोनों नौकरी के लिए साकेत जाते हैं। मतलब दोनों अगर एक ही जगह पर रिसाइड कर रहे हैं, एक ही मकान नहीं बोल रहा मैं, एक ही कोर्ट के जुरिडिक्शन में, या एक ही कोर्ट के जुरिडिक्शन में बिजनेस या वर्क कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एक जगह पर आप सूट कर दीजिए। कॉज ऑफ एक्शन पे तो आप हमेशा कर ही सकते हैं। सो द फर्स्ट क्लाउज रेफरिंग टू द सिचुएशन वेयर बोथ ऑफ देम आर रिसाइडिंग within the same court's jurisdiction or working or doing business within the same court's jurisdiction. That is where the first clause will work. ये समझ में आया? They are saying each of them. अब मान लो सिचुएशन ऐसा है, A has to file suit against B and C. Now this is the place of cause of action. This is the place where B resides and this is the place where C resides. This is the place where B and C both do their business. दोनों मिलकर वहाँ पर बिजनेस करते हैं। अब बताइए एज पर क्लाउज 1 कहाँ कहाँ सूट कर सकते हो। तो बताइए एज पर क्लाउज 1 कहाँ कहाँ सूट कर सकते हो। यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन रोज हुआ, यहाँ पर B रहता है, इधर C रहता है, और यहाँ पर दोनों बिजनेस करते हैं। तो एज पर क्लाउज 1, अब कॉज ऑफ एक्शन को अभी हम देख नहीं रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एज पर क्लाउज 1, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन की वजह से तो कर ही सकते हो आप यहाँ पर। वी आर टॉकिंग एज पर क्लाउज 1, सो वी कैन फाइल सूट हेयर। अब यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बी रहता है, दोनों नहीं रहते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ सी रहता है तो यहाँ पर भी दोनों नहीं रहते, इस वजह से यहाँ पर भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों का बिजनेस साथ साथ में इस कोर्ट के जुरिडिक्शन में है। और या फिर क्लाउज सी के अंदर आप प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन पे कर सकते हो। सो एज पर क्लाउज 1 दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइल सूट। सो इज दैट अंडरस्टूड। अब मान लो ए के लिए कन्वीनियंट है कि वो यहाँ पर सूट करे जहाँ पर बी रहता है, हो सकता है ए भी वहीं रहता हो। सो इट इज कन्वीनियंट फॉर हिम to file the suit at the place where B resides. Now, will it fall under clause A? No. Will it
fall under clause B? It may fall, provided either he has obtained the permission of the court that I want to file the suit where the B resides, but C does not reside. And if the court finds that it is convenient for all the parties, then the court may grant permission. Or A has filed the suit at where B resides, and C has acquiesced to that by not objecting to it and by filing his written statement. अब आपने बी वाली जगह पर सूट कर दिया, अब नोटिस गया सी को और बी को। अब सी ने आपके उस नोटिस का जवाब जो दिया, रिटन स्टेटमेंट जो फाइल किया, उसमें उसने प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, रेदर उसने मेरिट्स पे जो जवाब है सब फाइल कर दिया। व्हाट इज दैट? मीन्स सी हैज एक्वाइस्ड मीन्स सी हैज silently approved the fact that I am willing to contest the suit at place number B. So that is what is called acquiescence. Acquiesced, silently approved. अब बताइए क्लॉज बी और सी का डिफरेंस समझ में आया? सॉरी, ए और बी और सी बी कॉज ऑफ एक्शन. Main difference is between A and B. The difference is between A and B, clause A and B, clause B. ये समझ में आया आपको डिफरेंस इन दोनों के बीच में, क्लाउज ए और बी के बीच में? अब इसको लिख लीजिए आप. राइट, with respect to clause A and B of section 20, in cases of multiple defendants, the suit can be filed apart from the place of cause of action at any place where all the defendants resides. अब मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, वरना आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली एंड वॉलंटरी resides और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन. So where all the defendants resides, do business or work for gain, comma, or if there is no such common place, the suit may still be filed at the place of work, residence or business of either of the defendants, provided the permission of the court has been obtained or the other defendants do not object to it, rather they have acquiesced to the jurisdiction. अब एक्वाइसिस तो बाई कंडक्ट ही पता चलेगा. अब एक्वाइसिस कैसे प्रूव करोगे कि जब उसको नोटिस गया, उसने उस नोटिस के जवाब में ऑब्जेक्शन रेज करने की बजाय अपने नॉर्मल मेरिट्स का रिप्लाई फाइल कर दिया, एंड ही अपीयर्स इनटू द कोर्ट एंड डज नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन, सो दैट इज वेयर यू विल से दैट ही हैज एक्वाइस्ड. अब उनमें से अगर किसी एक ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया क्लाउज बी में, देन उस केस में द कोर्ट विल हैव टू सी प्लेस ऑफ कन्वीनियंट बिटवीन द ऑल. The court will see which place will be the convenient for all. अब कोर्ट का डिस्क्रिशन है that it may allow the suit at the same place, or it will direct to be suit to be filed at some other place. तो वो कोर्ट का डिस्क्रिशन हो जाएगा. The court will conduct the hearing on the objection. अब फॉर एग्जाम्पल बी रहता है कानपुर में और सी रहता है गोरखपुर में. तो अगर गोरखपुर में फाइल करता है तो बी ऑब्जेक्शन कर देता है कि मैं कानपुर में रहता हूँ, आना कन्वीनियंट नहीं रहेगा गोरखपुर में. और अगर कानपुर में फाइल कर देता है तो सी ऑब्जेक्शन रेज कर देगा कि मैं गोरखपुर में रहता हूँ, मेरा कानपुर में आना कन्वीनियंट नहीं रहेगा. तो कोर्ट उन दोनों के हिसाब से नहीं चलेगी, तो द कोर्ट विल गो फॉर ऑन इट्स डिस्क्रिशन. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन. एज ऑफ नाउ वी नो दैट द सूट कैन बी फाइल्ड एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस of the defendant. Let's talk about a single defendant. मान लो ए को बी के खिलाफ सूट करना है. Suppose he resides at this place. So here you can file the suit. He actually and voluntarily resides. दूसरा, he does business here. So you can file a suit here. And he does work for personally for gain. What is meant by personally for gain etc. वो सब आपको लास्ट में बता दूंगा. Or there can be a place of cause of action. Now these are the three places where you can file the suit. A is an individual and B is an individual.
अब सपोज B इज अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन। सपोज B इज अ कंपनी और कॉरपोरेशन। अब कंपनी या कॉरपोरेशन पर्सनली वर्क तो नहीं करेगा। विल अ कॉरपोरेशन वर्क पर्सनली फॉर गेन? नौकरी करना है, जॉब करना है। कॉरपोरेशन इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और वो जॉब तो करेगा नहीं। एंड देयरफॉर कॉरपोरेशन के केस में आपके पास प्लेस ऑफ वर्क का ऑप्शन नहीं आएगा। आपके पास प्लेस ऑफ वर्क का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब सपोज ए फर्म, देयर इज अ फर्म, इट इज नॉट पर्सनली वर्क फॉर गेन, neither it do business, sorry, it can do business, but it cannot personally work for gain। वैसे कंपनी होती है लीगल पर्सन। सो बिजनेस का प्लेस होता है कॉरपोरेशन और कंपनी के केस में, बट प्लेस ऑफ वर्क नहीं हो सकता। अब प्लेस ऑफ रेजिडेंस होगा क्या कॉरपोरेशन के केस में? कॉरपोरेशन के डायरेक्टर का हो सकता है, कंपनी के चेयरमैन का हो सकता है, या डायरेक्टर का हो सकता है, लेकिन कंपनी का एज सच कोई रेजिडेंस होगा? नो। अब जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है दैट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट द कंपनी और कॉरपोरेशन हैव अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पर कंपनी सो सकती है, जाग सकती है, ब्रेकफास्ट कर सकती है। ऐसा तो कोई कंपनी या कॉरपोरेशन कर नहीं सकती, बिकॉज इट इज ए लीगल एंटिटी। सो इन द केस ऑफ कंपनी और कॉरपोरेशन प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं हो सकता और प्लेस ऑफ वर्क भी नहीं हो सकता। सो इन द केस ऑफ कंपनी और कॉरपोरेशन you have got only two options. You can file the suit where the cause of action rise, or you can file the suit where the place of business of the companies। इस कंपनी और कॉरपोरेशन के केस में आपके पास the third option to file the suit at the place of work and the fourth option to file the suit at the place of residence is not there. So you have to file the suit either where the business has done or where the cause of action had arisen. So is that understood? That is the background for the explanation. इसको आप लिख लें। Please write, in the case of a company or corporation, the option of place of work and the place of residence, the option of the place of work or the place of residence is not there, as such a juristic person cannot reside or personally work for gain at a particular place thus the only two options are number one place of business and number two place of cause of action। अब देखो प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन तो आप देख सकते हो, जहाँ पर कंपनी का किसी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट इज द प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना था एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट परफॉर्म, दैट इज आल्सो द प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मान लो मी एंड यू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट दिल्ली एंड यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एट कानपुर and you did not perform. So there are the two places of the cause of action. One is Delhi, where the contract was entered into, and the place where the breach was committed at Kanpur, and the Kanpur was also the place of cause of action. So we are not discussing as a cause of action, place of cause of action right now. We have to discuss the place of business with respect to a company. एक कंपनी का place of business किस जगह को माना जाएगा? It would be the place wherever the company have the registered office. Suppose a company is having a registered office at Delhi and it also has the branches. मान लो एक इलाहाबाद में ब्रांच हो गई, एक ब्रांच मेरठ में खोल दी, एक ब्रांच लखनऊ कर दी, चंडीगढ़ कर दी। अब मेन ब्रांच इज एट दिल्ली, मेन ब्रांच मतलब हेड ऑफिस इज एट दिल्ली, एंड वन ब्रांच ऑफिस इज एट इलाहाबाद एंड वन ब्रांच ऑफिस इज एट चंडीगढ़। अब मान लो दो ही ऑफिस हैं, चंडीगढ़, इलाहाबाद, दिल्ली। अब इन तीनों में से विच इज द प्लेस ऑफ बिजनेस? विल यू से दैट ऑल दीज थ्री आर द प्लेसेस ऑफ बिजनेस, और विल यू से दैट ओनली दिल्ली वाला इज द ओनली द प्लेस ऑफ बिजनेस? अब टेक्निकली आप देखो तो ऑल दीज थ्री, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है वो भी,
और जहाँ पर ब्रांच ऑफिसेज हैं वो भी। प्लेस ऑफ बिजनेस तो तीनों को मानना चाहिए, लेकिन उनमें से बेटर चॉइस कौन सा होगा? हेड ऑफिस। अब जो भी मैंने बोला उसको भूल जाइए और एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़िए। A corporation shall be deemed to carry on business. So they are explaining as to what is the place of business of a company or a corporation. A corporation shall be deemed to carry on a business at its sole or principal office in India, at its sole or principal office in India, or in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place. अब इसको ब्रेक करके पढ़ो, ध्यान दो। A corporation shall be deemed to carry on business at its sole office in India. ये पहला पार्ट है। Sole office means what? It does not have branches. जिसकी कोई ब्रांच ना हो, सिंगल ऑफिस हो। Since it is a single office, so wherever this office is situated, that will be the place of business. फिर आगे कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस। अब दोबारा पढ़ते हैं इसको। A corporation shall be deemed to carry on business at its principal office in India. In this principal office, they are presuming there are branches. There are branches. Suppose head office is in Delhi and branches in Allahabad and Chandigarh. Now, as per this declaration, out of these three, which will be considered to be the place of business, where the principal business is situated? Sorry, where the principal office is situated. अगर उस कंपनी या कॉरपोरेशन के ब्रांचेज हैं, तो जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है, तो सिर्फ उसको आप प्लेस ऑफ बिजनेस मानोगे, ब्रांच ऑफिसेज को नहीं। और अगर ब्रांच ऑफिसेज नहीं है, सिर्फ एक ही ऑफिस है, तो फिर जहाँ भी वो मेन ऑफिस सिचुएटेड है, जहाँ भी वो सोल ऑफिस सिचुएटेड है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो समझ में आया आपके? तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें से दो चीज़ें निकल कर आती हैं कि अगर कंपनी अकेली है, कंपनी का सिंगल ऑफिस है, तो जहाँ भी उसका सोल ऑफिस है, सिंगल ऑफिस है, देन दैट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। और अगर उस कंपनी के ब्रांचेज हैं, तब भी जहाँ पे उसका प्रिंसिपल ऑफिस मतलब हेड ऑफिस हो, दैट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। अब सपोज इफ ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, सपोज एक्स कंपनी, अब द कॉज ऑफ एक्शन इज अराइजन एट प्लेस नंबर 1, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ब्रीच हुआ था एट प्लेस नंबर 1, and the company has head office at place number 2, and company has 2 branch offices at place number 3 and place number 4. दो ब्रांच ऑफिस हैं प्लेस नंबर 3 and 4 पर, प्लेस नंबर 2 पर हेड ऑफिस है, एंड द प्लेस नंबर 1 पे द कॉज ऑफ एक्शन इज अराइजेज। प्लेस नंबर 1 इज द प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। So tell me, where will you file the suit against the company? अब देखो, एक्सप्लेनेशन को क्लाउज सी से कोई मतलब नहीं है। क्लाउज सी तो कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। आप सूट कर सकते हो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ, एज पर क्लाउज सी, तो आप तो यहाँ पर तो सूट कर ही सकते हो प्लेस नंबर 1 पर, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आप कहाँ सूट करोगे? विच विल बी कॉल्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस। अब एज पर द एक्सप्लेनेशन, द प्लेस वेयर द हेड ऑफिस is situated, that will be the place of business, and therefore the place number 2 is the place where you can file the suit. Therefore the place number 2 is the place where you can file the suit. Place number 3 and 4 में आप नहीं कर सकते, because they will be not be considered to be the places of business. इस सब को मैं एक और बार समझाऊंगा, because it is very very important, one of the most important topics of CPC. Now come to the third part of the explanation. Or in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office. A cause of action arising at any place where the company also has a subordinate office at such place. अब इसका क्या मतलब हुआ?
तो सुनिएगा ध्यान से। अब एक सिचुएशन तो था द सोल ऑफिस, तो जहाँ सोल ऑफिस है वहाँ करो, और या फिर कॉज ऑफ एक्शन जहाँ राइज हुआ वहाँ करो। सो इन केसेस ऑफ सोल ऑफिस इज द प्लेस ऑफ बिजनेस। दूसरा सिचुएशन है प्रिंसिपल ऑफिस भी है और ब्रांच ऑफिस भी है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन किसी थर्ड प्लेस पे राइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन हैज नॉट अराइजन एट द प्लेस ऑफ branch office or head office. Cause of action has arisen at a third place. Then the place where the cause of action arose and the place of business will be considered to be the head office. So you file it at the head office or at the place of cause of action, as we had seen here. But the third situation is that there is a head office and there are branch offices, and the cause of action has arisen at either of those branch offices. Cause of action किसी एक branch office में राइज हो गया, तो place of business किसको बोलोगे? उस branch office को बोलोगे, ना कि दूसरे branch offices और ना ही head office. So that is the third part. That is the third part. इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। मान लो ये उस कंपनी का हेड ऑफिस है और ये दोनों उस कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज हैं. This is the head office of the company and these are the branch offices of the company. And the cause of action, suppose, has arisen at this branch office, at one of the branch offices. What will be the considered to be the place of business? The place of business will be only that branch office, not the other branch office and not the head office. तो ये मेन पॉइंट आपको पकड़ना है. Place of business will be only this branch office, neither the head office nor the other branch office. मतलब सिंपल सा पॉइंट है. वैसे तो हेड ऑफिस होगा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन किसी ब्रांच ऑफिस पर राइज हो गया है तो उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ वो ब्रांच ऑफिस माना जाएगा, हेड ऑफिस भी नहीं और ना ही कोई और ब्रांच ऑफिस. अब आप बताएं इसमें सूट कहाँ करेंगे आप? मान लो ये 1 2 3 है, 1 2 और 3, तो इसमें कहाँ करोगे आप? प्लेस नंबर 2 पर. एंड बाई वर्च्यू ऑफ क्लाउज सी आप कहाँ करोगे? तो इसमें भी आपके पास कहीं ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ है? एट 2 ओनली, बिकॉज आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज एट प्लेस 2 ओनली. बट आप सपोज पार्ट ऑफ द cause of action arise here. Part of the cause of action arise at place number 2 and another part of cause of action will arise at place number 4. अब बताइए. So he can file, in this situation he can file the suit at the place number 4 where the cause of action has arisen, or he will file the suit at the place number 2, which is the place of business of the company, because at that branch office the cause of action has arisen. Now read it once again. A corporation shall be deemed to carry on business at its sole office in India. Then a corporation shall be deemed to carry on business at its principal office in India. Then, in respect of any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place. When we are talking with respect to any cause of action arising at any place where it has also a subordinate office at such place. So you see there are three situations. The cause of action arises here and the sole office is also here. कोई branch नहीं है. It is a single office. Which is the place of business? It is place number 2 only. And where will you file the suit? At 2. But if the cause of action is arisen at place 1, then where will you file the suit? At 2 and 1. 2 or 1 either. By virtue of clause 1 you will file here, and by virtue of clause C you will file here. Now the other situation is number 2. This is the head office and this is the branch offices. 1, 2,
3 और कॉज ऑफ एक्शन मान लो प्लेस 4 पर अरोज हुआ है। अब हेयर द कॉज ऑफ एक्शन नॉट अरोजन एट द ब्रांच ऑफिस। अब विच इज द प्लेस ऑफ बिजनेस? अब हेयर द कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट अरोजन एट द ब्रांच ऑफिस and therefore you will go by the second rule, the place, and therefore the place of business will be this. So by virtue of the clause 1 read with the explanation, आप सूट यहाँ कर सकते हो, and by virtue of clause C आप सूट यहाँ कर सकते हो। And the third situation is, in the third one, this is the place where, fourth one, yeah, fourth place is this is the place where the cause of action arises, and this is also the place where the part of cause of action arises at 2. So one part of cause of action arises at place number 2 and one part is at 4. And place number 2 is also a branch office. Place number 4 is not a branch office. Place number 2 is a branch office. Cause of action arises at place number 2 and place number 4 partly. Place number 3 is another place where the another branch office is there, and this is the place where the head office is there, प्रिंसिपल ऑफिस इज देयर। अब बताइए कहाँ कहाँ पर हो सकता है सूट। अब पहले ये देखो कि प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ माना जाएगा। एज पर द लेटर पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, इफ द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन एट द सबऑर्डिनेट ऑफिस, एट द ब्रांच ऑफिस, द प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी एट सच प्लेस। यही लिखा है, विल बी at the place where the branch office is situated and not at the other branch office nor at the head office. That is what is implicit in the third part of the explanation. Third part क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो आप। Or in respect of any cause of action, or in respect of any cause of action arising at any place where it also has a subordinate office, arising at any place where it also has a subordinate office at such place। मतलब वो क्लियर बोल रहे हैं कि वैसी जगह जहाँ पर ब्रांच ऑफिस है और कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पर अराइज हो जाए तो प्लेस ऑफ बिजनेस एट सच प्लेस मीन्स एट द ब्रांच ऑफिस एंड नॉट एट द हेड ऑफिस। अब इस एग्जाम्पल में मान लो कॉज ऑफ एक्शन पार्टली 1 में अराइज हुआ, पार्टली 2 में राइज हुआ और पार्टली 3 में राइज हुआ, और 2 और 3 में दोनों में ब्रांच ऑफिस भी है। So the place of business will be considered to be at 2 and 3 also। और मान लो 4 भी है, यहाँ पे cause of action arise हुआ है बट यहाँ पर कोई ना ब्रांच ऑफिस है ना हेड ऑफिस है। अब बताइए सूट कहाँ कहाँ हो सकता है। एट 1, 2, 3 एंड 4, चारों जगह हो सकता है। 4 में भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, इस वजह से इधर भी हो सकता है। बट फॉर हेयर even if 1 is the head office, it will be considered to be a place of business because cause of action arouse हुआ है इधर। और 2 और 3 और में भी आप प्लेस ऑफ बिजनेस है क्योंकि ब्रांच ऑफिस है, इस वजह से 2 और 3 में कर सकते हो। कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे आप 1, 2 और 3 के में भी कर सकते हो, बट क्योंकि इधर हेड ऑफिस है 1 में और 2 में और 3 में ब्रांच ऑफिस है, 2 and 3 में देयर आर ब्रांच ऑफिस, so they will be considered to be a place of business। और 4 में सिर्फ cause of action है, there is no branch office or head office, so it is not a place of business। तो यहाँ पर cause of action के बेसिस पे आप सूट कर सकते हो। तो सूट कहाँ जाएगा, all 4 places, 1, 2, 3 and 4। अब इसमें लिख लीजिए आप एक पैरा। अब देखो पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर, इट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप का मैटर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो वो सेक्शन 20 में फॉल करेगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर विल फॉल अंडर सेक्शन 16। और जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर आएगा तो प्रोप्राइटर कहाँ रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर एवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड दैट इज द प्लेस। लेकिन देयर आर प्रोवाइजोज इन सेक्शन 16 जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। We would discuss that when we discuss the section 16.
For this you will write in first point, where the company has sole office and no branches, suit can be filed at the place of cause of action or at any place where the sole office is situated, as the sole office would be the place of business. Then second point में लिखिए, where there are several branches and one principal office, and the cause of action has not arisen at either of the branch office or at the head office, then the place of business will be the head office, and the suit can be filed at the head office or at the place of cause of action. Then third point में लिखिए, however, if in the above case मतलब second point, if in the above case, however, if in the above case means second point, the cause of action has arisen at any of the branch offices, और branch office में भी head office implied है, ब्रैकेट में लिख लो, or even at the head office, such place where the cause of action arises will be called the place of business and not the other offices where the cause of action has not arisen. तो जिस ब्रांच ऑफिस पे या हेड ऑफिस पे जहाँ भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया उसको, या एक से ज़्यादा हो, उन सबको आप प्लेस ऑफ बिजनेस बोलोगे, और जहाँ पर अराइज नहीं हुआ है हेड ऑफिस में या ब्रांच ऑफिस में, दैट विल नॉट बी द प्लेस ऑफ बिजनेस. सूट आप कहाँ फाइल करोगे? एट द प्लेस वेयर cause of action has arisen independently or any place where it is a place of business. That is the place where it is a head office or branch office where the cause of action is arise. So इसको भी लिखो, the suit can be filed at all such places which can be called place of businesses as above, which can be called place of business as above, and also at such place where the cause of action independently arose, and also at such places where the cause of action independently arose. independently मतलब जहाँ पर ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस वगैरह नहीं है और वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन इंडिपेंडेंटली अरोज हुआ है. अब इसको एक और बार समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 2 केसेस हैं इसमें दैट वी हैव टू डिस्कस. सो that's it for this lecture. Thank you.